the jurisdiction of the Supreme Court under Article 185, can we discuss the factual aspect of the election dispute? Ji? Factual aspect of the disputes can be discussed or decided in another petition which is not election dispute. So this was not an election dispute which was covered by Article 225. That is why this objection was never raised. Na to ye raise hota. This was an order of the ECP which was challenged before the Peshawar High Court, and that order was then before your court. Order of the ECP was limited to reserve seats, only to the extent of request of SIC and the request of other parties. So there was no request of other parties. Yes, बिल्कुल मल्टीपल एप्लीकेशंस थी. उन्होंने मान लिया डिसीजन. सॉरी, उन्होंने डिसीजन मान लिया क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया था कि सीट्स हमें दी जाएं. उनको देयर आर टू पार्ट्स टू द ऑर्डर. वन इज SIC is denied whether PTI requested. No, PTI did not request. Despite the fact that they filed list of candidates and yes, they did not request. They did not request before these. Anybody has compelled them, forced them, sir, उसका भी जवाब दिया है, वो मैं जजमेंट में पढ़ूंगा. इसका सबका जवाब है. जब हमारे सामने आए जी, PTI हमारे जी बिल्कुल आई, उन्होंने एप्लीकेशन दी. इसका मैं इसलिए इसका जवाब कि PTI आपके ज़हन में सवाल कि अगर PTI ने सीट्स मांगी नहीं तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह सीट. मैं जब अगर आप जवाब पढ़ लेना कि जो सुप्रीम कोर्ट में इनका एप्लीकेशन है, सलमान अकरम राजा इज हियर, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन था. मैंने कहा आप एप्लीकेशन PTI की तरफ से, लेकिन ये आर्गुइंग इन फेवर ऑफ SIC. मैं उसका भी जस्ट लाइक यू SIC की तरफ से, क्योंकि देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट. आप आर्ग्यू कर रहे हैं PTI. As his lordship Justice Mazhar and Justice Hasan has held in the majority judgment, there is no conflict. कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है. हमें कोई सरोकार नहीं कि आप दोनों का इंटरेस्ट एक ही अलग है. हमने ये देखना है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन which party is entitled. Yes. और आपने अगर PTI थी भी नहीं, आपने जब भी उनको रिजर्व सीट्स दे दी, और मैं आपकी जजमेंट पढ़ूंगा, उसकी रीजनिंग पढ़ूंगा कि आपने किस तरह उनको सीट्स दी, although they were not formally a party. But let me just skip this part which I will come back to, which is the factual thing, and I will come to page 11. अगर आप आ जाए, I will come to this part. मैं यू स्किप करता रहूंगा. अगर आप मेरी जजमेंट पे इतने ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, उसमें हमने ये भी कहा था कि सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और कोर्ट पे ना डालें, अपनी जिम्मेदारी भी बिल्कुल आपने सही कहा. आप एडमिट करें कि आप बिल्कुल ब्लंडर्स हुए. मैं बिल्कुल तो ये पढ़ लें, उसके बाद जमात साहब का भी जजमेंट पढ़िएगा. मैं तो पढ़ूंगा वो, मैं तो बिल्कुल, और मैं अर्ज करूंगा क्योंकि सारा पाकिस्तान देख रहा है कि द मिनॉरिटी जजमेंट, आई डिसएग्री विद द मिनॉरिटी जजमेंट ऑफ जस्टिस अमीनुद्दीन जस्टिस, बट इट इज अ वेरी फोर्सफुल जजमेंट. एंड मुझे वो गालिब का वो शेर याद आता है, ये जजमेंट पढ़ के, जो गालिब ने रकीब के हवाले से कहा था कि कितने शीरी है तेरे रब के रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ. तो आई मीन द पॉइंट, इट्स अ वेरी पावरफुल जजमेंट. अभी आप क्वेश्चन अब ले लीजिए, क्योंकि आप जो है ना इधर गालियां का मतलब सर सिर्फ ये क्रिटिसिज्म. अब ये बताइए, में गालियां आम बोलचाल को भी कहते हैं. ये जो जमात साहब ने कहा ना कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन और कोर्ट की नहीं है जी. अब इस सारे सिनेरियो में जहां ECP एज पर योर कंटेंशन एंड 11 मेंबर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, द रिटर्निंग ऑफिसर, वो सारे गुनाहगार हैं जी. तो इन मासूम लोगों को आपने क्यों ज्वाइन कराया जब आप जानते थे कि यू आर नॉट ए पार्लियामेंट्री पार्टी? जी, मिसलीड तो आपने किया. नहीं, मिसलीड नहीं सर. एक बार सलमान आप जवाब दे दीजिए. मुल्क के तमाम टॉप के जो लॉयर्स थे ना, वो इस पार्टी में उस वक्त इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे. जानते हुए कि यू आर नॉट ए पार्लियामेंट्री पार्टी, आपने उनको ज्वाइन कराया जी, और उन्होंने ज्वाइन किया. अब मैं उसी पे आ रहा हूँ. सो पेज, एक मिनट प्लीज, आप दे दीजिएगा ना सलमान. एक राजा साहब प्लीज, कोई गलत काम अगर पहले वो उसको इंडोर्स नहीं करेंगे जी. अगर आप समझते हैं कि वो आप गलत है तो पूरी सुनेंगे आप लेकिन देखिए ना, कर दीजिए. थोड़ा सा बोझ फैसल पे भी ना आए ना. नहीं, इसने मैं उतना बोझ लूंगा सर जितना ले सकता. जहां आप सही बात करेंगे मैं आपसे एग्री करूंगा. फिर डाइवर्शन वहां से हुई जी, वो सारी चीजें ठीक सर. वो उसमें ऑफ कोर्स
کہ ایک پھر رانگ کو اور پھر اس کو آپ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں کہ دیٹ جی از دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نیگلیجنس ہماری طرف سے نہیں تھی, بٹ دا پوائنٹ از کہ جو مین, اور دس از واٹ 11 ججز ہیو سیڈ, کہ جو مین مسئلہ کریٹ کیا ہے وہ ای سی پی نے کریٹ کیا. سو دیٹ از واٹ دے ویلٹ. بٹ لیٹ می But you are not responding the question. جی Because you have so many legal brains in your party. Whether they have not read Article 51 of the Constitution and especially Clause D and its proviso. سر ان کا یہ خیال تھا کہ بیکاز there was this rule in the election rules. There is no rule. This is میں آپ کو بتا رہا ہوں. This is the constitutional provision. The proviso of Clause D of Article 51 says, provided that for the purposes of this paragraph, the total number of general seats won by a political party shall include the independent written candidates. So this is the very crucial question asking by the other members of the benches. Political party has been defined in Section 2 of the Election Law, Election Act. So آپ اس کو this is very ایڈمٹ much بھی کر clear. رہے ہیں کہ دا پوائنٹ از یہ بات اب جا کے کلیئر ہوئی ہے آفٹر یور لارڈشپ's judgment. No, the constitutional provision was سر دیکھیے clear. کانسٹیٹیوشن اتنا کلیئر ہوتا. فیصل ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو ڈائریکٹ نام لے لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو وہ غلط فہمی تھی, ایسا نہیں ہے. اگر ان کو غلط فہمی ہوتی وہ اپنے ریزرو سیٹ کے لیے لسٹ نہ جمع کرتے. اگر ان کو غلط فہمی سر دیٹ واز بیفور دا سمبل واز ڈینائڈ. اگر ان کو غلط فہمی ہوتی وہ سرٹیفکیٹ جاری نہ کرتے. اگر ان کو غلط فہمی ہوتی تو کینڈیڈیٹ nomination papers were submitted much prior to the filing of appeal before the Supreme Court. آپ یہ میری ججمنٹ اس وقت تک سمبل ڈینائی نہیں ہوا تھا, تو اس وقت تک تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا, اسی لیے تو لسٹ فائل کی. چلے پھر ہم کریڈٹ دیتے ہیں, ہم ان 6 لوگوں کو کریڈٹ دیتے ہیں جو کہ ان تمام معاملات کے باوجود still they were part of PTI. سر دا پوائنٹ از وہ تھے کہ باقی. چلے ایک اور بات ہے, آپ کے سامنے مثال تھی ہمارے ایک ججمنٹ سے کسی زمانے میں, اگر آپ کو یاد ہو سینٹ الیکشن میں مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹس کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا فار دا ریزن کہ ہیڈ آف دی پارٹی از ناٹ ہیڈ آف دا پارٹی, دیئرفور وہ آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن لڑا. جس دن نوٹیفیکیشن ہوا فوراً وہ واپس اپنی پارٹی میں چلے گئے. What has compelled you, what has restricted you not to join that party? The question is why you compelled them to join your party. یہ دونوں کوشچن ایک ساتھ. سر دا ریزن از دیکھیے ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ آپ کی ججمنٹ نے کلیئر کر دی. وہ آپ کی ججمنٹ نے کلیئر کر دی کہ وہ انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. You are blaming only ECP, but you are not considering your own blunders. Sir, this is the proviso which is clear. بالکل negligence ہماری طرف. How such a legal brains and legal acumen having so many advocates and their counsel, the proviso was misread. Why you have not joined such a party which has even one single seat in the parliament? آپ اگر اس میں جاتے تو آپ کا کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا نا. Sir, the point is there have been such great judges of the Supreme Court. They have committed such big blunders by giving such bad judgments. تو غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں. یہ تو لکھا ہوا تھا نا, یہ تو اسٹیچوٹ کانسٹیٹیوشن ہے, کلیئر ہے. یہ سارے بگ نیمز جو ہیں اس وقت کنٹری کے, یہ اس وقت الیکشن اگر اتنا کلیئر ہوتا تو ہمارے پاس سپریم کورٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اور آپ کی ضرورت یہ بات سب سے زیادہ ضرورت یہ بات نہیں ہے. فیصل دیکھیے آپ کا اپنا کیس ہے کہ یو آر فائٹنگ ود ایوری انسٹیٹیوشن. جی وی ایگری ود یو. اف اٹ واز دی پوزیشن اینڈ دی فیکٹس تو آپ کو تو زیادہ کانشیس ہو کے اور بہتر. میں اسی پہ آ رہا ہوں, میں ان سب سوالوں کا جواب میجورٹی ججمنٹ سے دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں نے کیونکہ ایک پورشن میں بعد میں پڑھوں گا, پیج 11 پہ جو ریلیونٹ فیکٹس ہیں اور جو پیج وہ میں پڑھ چکا ہوں. I don't think I need to read them. I think your lordship is aware of the facts as well as یہ جو سارے سوال اٹھ رہے ہیں. میں صرف ارج کروں گا کہ اگر آپ پیرا 19.1, 19.2 and 19.3 دوبارہ پڑھ لیں تو آپ کو پورا پی ٹی آئی نے جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. اب لیٹ می کم ٹو پیج 15 پیرا 20. کل بھی فیصل بات ہوئی تھی whether CMA 5913 of 24 was for impleadment by the PTI. Impleadment to assist, yes.
क्या हुआ उसका? जी वो भी मेजॉरिटी जजमेंट से डेल्ट है। नहीं वो भी मैं किसी ने प्रेस ही नहीं की। मैं नहीं प्रेस बिल्कुल प्रेस की इन्होंने असिस्ट की सलमान जी अकबर जी साहब तो बिल्कुल एसएस की। उन्होंने कहा मैं फॉर्मली बनाने की जरूरत नहीं, मैं मेजॉरिटी जजमेंट पे आता हूँ। Impleadment की application नहीं थी ना फिर. If they had simply asked for the intervener Yes. to assist the court, Yes. there was ये पे wrong no लिखा गया prayer ना for यहाँ. the impleadment either as a petitioner or as a respondent. And this honorable court held that there was no need for that. Yes, This yes, is what the you are right. majority. This is paragraph 19. बिल्कुल But it was not for impleadment. It is for just as an intervener to to assist assist the court. assist उसमें ये बिल्कुल नहीं And लिखा you हुआ know था कि as a that- petitioner or a and you know respondent. that under the niceties of Order 1 Rule 10 CPC, you have to mention either you want to be impleaded Yes. as a petitioner or the respondent, Yes वो mention नहीं था or the transposition of parties. जी और इसीलिए